So hello everyone. Today we have a new Leetcode problem which name is Palindromic Substring Leetcode 647 problem. So let's read the problem statement. Given a string S, return the number of palindromic substrings in it. Means we have given a string and we have to return how many palindromic substrings are there. So a string is palindrome when it reads the same backward and forward. A substring is a contiguous sequence of characters within a string. So firstly, what is palindrome? So this is the important part. What is palindrome? So we can take an example. If my string is ABBA, this is my string. So my first character means starting index is 0 and end index is n minus वन विच इज द ए बी बी ए एंड बाय ए. ये दो मेरे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स है. अब मैं चेक करूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स वाला एस ऑफ स्टार्ट और एस ऑफ एंड दोनों. एस मीन्स स्ट्रिंग, एस ऑफ स्टार्ट एस ऑफ एंड सेम है या नहीं. सेम है तो स्टार्ट वाले को आगे बढ़ा दूंगा, एंड वाले को पीछे ले आऊंगा. ठीक है. अब चेक करूंगा फिर से कि मेरा चेक मीन सेम है या नहीं. सेम है, स्टार्ट को आगे लाऊंगा, एंड को पीछे लाऊंगा. ठीक है. ये भी सेम है तो दिस इज अ palindrome, otherwise it is not a palindrome. So string. So let's take an example for this. If we have a string abc, so as you can see a and c are not equal. So if we take the string of length 3, then this will not a palindrome. If we take a string of length 2, then also it is not a palindrome because a and b are not equal and b and c are not equal. If we take a string of length 1, I am saying string, it is a substring. So if we take a substring of length 1, then it can be a palindrome because a itself is a palindrome, b itself is a palindrome, and also c itself is a palindrome. So here three palindromic substrings are there, so that's why we will return 3. So let's take example 2. If we have given this string, so if firstly we will take palindromic substrings of length 1, so a, so this will three strings are there. If we take a palindromic substring of length 2, तो कौन से एक और दो, ये दो स्ट्रिंग्स ये हो जाएंगी. और इफ वी टेक अ palindromic substring of length 3, then this will be also a palindromic substring because a itself is a palindromic substring. So let's see the approach for this. So as you can see, here is the example ABC. So total number of substrings can be A, AB and ABC if we start from A. If we start from B, then it can be B, then BC. If we start from C, then this can be C also. So total number of substrings are n into n plus 1 by 2. Here n equals to 3. So 3 into 4 by 2, it will be 6. So as you can see, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 substrings are there. Now let's see how many substrings are palindromic. Palindromic, it means the first and last character should be same, then another first and last character should be same. So A and B is not equal, ABC is not equal, B and C is not equal. So it's substring of length 1, which is A and B and C. This will be the palindromic, so our answer will be 3. If we take another example, race car. So this is an important example. If we start from R, if we start from R, then our total number of substrings can be R, then RA, then RAC, then RACE. It is like this. If we start from A, then our substrings like A, then AC, then ACE, then ACEC, like this. And as same as we will create the whole substrings. So how many substrings are there? If the length of this is 7, so 7 into 8 by 2, it means 26, I think. So 26, no 26 nahi, 28, 28, huh. So 28 will be there. So the total number of substrings are 28. Now we'll check how many are palindromic. So how we'll check? Let's see. If we take this string, this substring, actually this is the string, full string, huh. So R and R is same. Then we will go further and इसको इस वाले पॉइंटर को बैक वाले को पीछे लाएंगे. Then we'll check A and A equal, then C and C equal, then E is itself a palindrome. Okay. So this substring is palindromic. हमें पता है कि this substring is palindromic. The main thing is the middle character is E. If this substring is palindromic, so A C E C A, ये वाली सबस्ट्रिंग,
और ये वाली सब स्ट्रिंग, ये तो अपने आप ही पैलिंड्रोमिक होगी, बिकॉज दिस, अब इफ दिस होल सब स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक, सो इसका एक पार्ट, बीच वाला पार्ट ए सी ई सी ए, ये क्या है, ए सी ई सी ए, ये वाली सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक होगी, विच इज दिस वन। अब दिस, ये वाली सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, तो इसका बीच वाला पार्ट सी ई सी भी पैलिंड्रोमिक होगा, सो दिस वन, एंड ऑल्सो ई इज अ पैलिंड्रोमिक। सो we are using the previous computed substring. So this is the hint also. As you can see the hint, how can we use the previously computed palindrome to compute a large palindrome? The mean of this line is we will use GP in this, because the previously computed palindrome, it is saying, if it is saying previously computed elements, means there are some cases that are repeating, so we can use DP here. So this is the major hint. If we have created this one, now we will create a DP matrix. So this is the, actually I will say this is the moderate to tougher level problem, if we understand the concept behind it. So if we create the DP, so our string is like RACE CAR and also RACE CAR, because अब क्या करेंगे देखो, पहले ये वाली लाइन के हम डायगनली जाएंगे, ठीक है, डायगनल चेंज करेंगे। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, वन लेंथ वाली सब स्ट्रिंग को, ये वाली लाइन सेकंड टू लेंथ वाली सब स्ट्रिंग को, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, ठीक है। तो ये वाली ऐसे शो कर रही है कि हम डायगनली जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी स्ट्रिंग आर से ही स्टार्ट हो रही है, लाइक आर से स्टार्ट हो रही है और आर पर ही खत्म हो रही है, और वन लेंथ की है इस स्टार्टिंग वाली, अगर आर, आर itself is a palindromic, we know that r itself is a palindromic, a itself is a palindromic, c itself is a palindromic, like this. So e भी palindromic होगा, c भी palindromic, a भी palindromic, so r भी palindromic, ठीक है। तो हमें पता है कि string of length 1 is also palindromic, means always palindromic. so इसको अगर R से स्टार्ट हो रहा है, R पे ही खत्म हो रहा है, तो सारे ये भी ट्रू हो जाएगा। A से स्टार्ट हो रहा है, A पे खत्म हो रहा है, ट्रू। C से स्टार्ट हो रहा है, C पे खत्म हो रहा है, ट्रू। सो ये वाली पूरी जो है डायगनल है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, 0 1, 0 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, लेंथ 1 वाला तो कंप्लीट कर दिया, अब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 वाला देखेंगे। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 वाला कैसे देखते हैं, इफ वी हैव स्ट्रिंग ऑफ आर ए, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर शुड बी सेम, मीन्स हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीन्स 2 कैरेक्टर्स है। तो द फर्स्ट कैरेक्टर इज आर, सेकेंड कैरेक्टर इज ए। अगर आर ए कोई है, कोई नहीं है पैलिंड्रोमिक, तो फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ये फॉल्स कर दिया। ए ए सॉरी, हाँ, ए और सी ये नहीं है, ए और सी कहाँ इक्वल है, पैलिंड्रोमिक नहीं है, सो ए और सी इसको फॉल्स कर देंगे। देन सी और ई इसको भी फॉल्स कर देंगे, ई ऑफ सी इसको भी फॉल्स कर देंगे। इट इज लाइक दिस कि दो लेंथ वाला ले लिया और चेक कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल टेक अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 आर ए सी, जैसे आर ए सी। सो वी कैन सी हेयर इज कि मिडिल एलिमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर अगर सेम होंगे, मीन्स लाइक सी ई सी, अगर फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है तो बीच वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीच वाला सिंगल कैरेक्टर और ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। सो सी ई सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को देखेंगे, अगर इक्वल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स कर रिटर्न कर देंगे। तो आर और ये वाला, हाँ ये था, हाँ, आर और सी इक्वल है, नहीं है, फॉल्स कर दो। ए एंड ई इक्वल है, नहीं है, फॉल्स कर दो। सी एंड सी इक्वल है, हाँ, सी एंड सी इक्वल है, तो ट्रू कर देंगे। इट इज लाइक दिस कि हम पहले ये बना देंगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, जो कि 4 लेंथ वाले पर आते हैं, ठीक है। 4 लेंथ वाले के कैसे लिखेंगे कि अब हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 है, सो फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी सेम, एंड देन अगेन फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी सेम, स्टार्टिंग और एंडिंग को पीछे ले आए। अब देखते हैं, देखो इसको कैसे देखेंगे। यहाँ मेरे वन लेंथ का था, यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का था, यहाँ 4 का था। अब देखेंगे आर और ई, स्टार्टिंग और एंडिंग के तो सेम होने चाहिए। आर और ई सेम है क्या, नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो। देन ए एंड सी सेम है, नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड सेम एज कि सी और ए ये सेम है, इसी तरह ये वाली पूरी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, ये सारे फॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि
फर्स्ट एंड लास्ट वाले सेम है ही नहीं। अब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 में भी सेम आइडिया है, फर्स्ट एंड लास्ट सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो आगे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे मैं बताऊंगा। इसको देखते हैं, ठीक है। अब हाँ, चेक करते हैं आर एंड सी इक्वल है या नहीं है। आर एंड सी इक्वल नहीं है, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। नाउ ए एंड ए, हाँ, ए एंड ए सेम है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ए एंड ए सेम है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ए और ए सेम है, ये वाली स्ट्रिंग है मेरी, ए और ए सेम है, तो मेरे को पता है यार बीच वाला पार्ट है जो सी ई सी, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 में। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 में अगर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 में ये बीच वाला पार्ट ट्रू था तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको मार्क करके लिखा है कि हमें एक रो नीचे जाना है, मीन्स रो को इंक्रीज करना है और कॉलम को डिक्रीज करना है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 पर आ गए अपन, हाँ, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 पर आ गए यहाँ पे, और ये वाला ट्रू मार्क हुआ पड़ा था, तो इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे। वाई? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर तो सेम है। यहाँ देखो, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर तो सेम है। अब मेरे को बीच वाला पार्ट देखना है, सी ई सी। सी ई सी वाले पार्ट को मेरे को पता है कि यार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 है, और अगर ये वाला स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 वाला पार्ट मेरा ट्रू था तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये इसी तरह से हो गया, और ये वाला भी सेम है। अब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 वाला देख लेते हैं। 7 वाला देख लेते हैं, आर से स्टार्ट हुआ आर पर खत्म हुआ, आर से स्टार्ट हुआ आर पर खत्म हुआ, तो सही है। तो अपन को देखना है अब बीच वाला पार्ट कैसे देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 वाला। तो स्ट्रिंग, ये क्या है बीच वाला पार्ट, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5, क्योंकि लेंथ 5 है। अब इसको देखेंगे कि यार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 हम कर चुके हैं पहले ही। अगर ये वाला पार्ट ट्रू था तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो मैं एक रो नीचे जाऊंगा और एक कॉलम पीछे जाऊंगा, मीन्स एक वी विल इंक्रीज अ रो बाई 1 एंड वी विल डिक्रीज आर कॉलम बाई 1। सो एक रो को एक नीचे जाएंगे और कॉलम को एक पीछे ले जाएंगे, और ये वाला पार्ट चेक करेंगे, ट्रू मार्क हुआ पड़ा है तो इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे। So like this we will create a DP matrix. So this is the important, very important part for this, for understanding purpose. Then do for doing the code, it is not a big task. So here what we are doing is we have created this DP matrix, and ये वाला पार्ट तो हमेशा false होगा, ठीक है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। सो इसको तो फॉल्स कर देंगे क्योंकि हम लेफ्ट पे राइट चल जा चुके हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डायगोनल वाइज ट्रेवर्स कर रहा हूँ। आपने भी देखा डायगोनल वाइज ट्रेवर्स किया। स्टार्टिंग मैंने 0 0 वाले को डाला था, फिर मैंने 1 1 वाले को डाला था, ये वाली भरी थी ना पहले रो, तो 0 0 1 1 2 2 ये वाला डाला था। फिर मैंने ये वाली रो भरी थी, ये वाली रो कैसी है, 0 1, फिर 1 2, फिर 1 3 ऐसे डाला था। तो सबसे पहले मैंने 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वाले डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने 0 1 वाला डाला, फिर 1 2 2 3 इस तरह से डाला, एलिमेंट मतलब ट्रू फॉल्स डाला, फिर 0 2 1 3 ये वाली डाली, ये वाली डाली, सारे डाल दिए। नाउ व्हाट आई कैन सी इज here difference, we will find the difference if we take a pointer I and j. So I is going from 1 to 6 and j is going from 0 to, means 0 to 6 we can say. So I 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन साइज तक जा रहा है, ठीक है, लेस देन साइज, हाँ। और जे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन साइज आ रहा है। पर ये देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर कितना है डिफरेंस 1, यहाँ पर कितना है डिफरेंस 2, और ये वाला डिफरेंस किसके इक्वल है, जे के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ लेट्स डू द कोड फॉर दिस so that we can understand properly. So doing the code is not a big task, so understanding purpose is the only the task. Yeah, 1 minute. Hmm. So firstly what I will do is I have to create a 2D DP. So firstly let's create this vec array vector of vector bool, जिसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी, dp of s dot size comma vector bool of s dot size, ठीक है। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डीपी एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट इंट काउंट विच इज 0, जो हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रेवर्स diagonally
सो जो डिफरेंस निकाला था ना हमने, उससे रिवर्स करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू हाँ डिफरेंस, सो आई मीन्स डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो बिकॉज वी विल यूज आई जे एंड डिफरेंस, 3 पॉइंटर, तो इसलिए मैंने नेम डिफरेंस रखा है इसका। डिफरेंस शुड बी लेस देन, अपना एस डॉट साइज है, और डिफरेंस प्लस प्लस। नाउ एक और हम लूप का यूज करेंगे आई और जे को ट्रिवर्स करने के लिए। सो कैसे करेंगे, फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा डिफरेंस, अरे यार, आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा डिफरेंस इक्वल्स, सॉरी, जे इक्वल्स टू डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने दो इनिशियलाइज कर दिए, आई को जीरो पे इनिशियलाइज कर दिया, जे को डिफरेंस इनिशियलाइज कर दिया, और अब मैं कंडीशन लगाऊंगा जे शुड बी लेस देन एस डॉट साइज, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी, और यहाँ पर आई प्लस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी है, मीन्स we have created two loops. Now what I will check, now I have some conditions. If difference equals to 0, now as you can see here, difference is 0, 0, 0, 0, 0, 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5, some difference equals to 0. If my difference equals to 0, so we can directly return is true, because here difference is 0 and the complete row is true. Why complete this diagonal is true? Because if difference is 0, it means there is only one character. There is only one character, and the one character itself is a palindrome. So dp of I of j equals to true, ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, हाँ, else if difference equals to 1, if my difference equals to 1, it means if my difference equals to 1, so as you can see in this table, if my difference equals to 1, it means we have a string, we have a substring of length 2. If we have a substring of length 2 and the starting and the ending index character is same, then we will say it is a palindrome, otherwise we will not say it is a palindrome. So with in this condition, what I will check is if s of I, so it should be s of I equals to s of j, if, because it's a, मैं लिख देता हूँ, substring of length 1, यहाँ पर, sorry, length, this is a length 2, and substring of length 1. Here this was the substring of length 1, because this was the substring of length 1, it means that there are only one characters. Okay, so one character is also it is itself is a palindrome. If substring of length 2, so there are two characters. Now we have to check the first and the last character is same or not. If the first and last character is same, it means dp of I of j, dp of I of j equals to true, and otherwise else case, return false, dp of I j equals to false. Now we have checked two condition, and in else case what I will do is I'll check, as you can see here, like my string of length 5. If I have a, I will check string of length 5. So in this condition, I will check the first and last character is same or not. If my first and last character is same, so middle character check करने की कोई जरूरत नहीं, because we have done with this middle length. If here middle length is 3 and we have done with this, like if this is a palindromic or not, if we have done this, if we have if we have marked it as true, so it means the complete substring is true, otherwise the our substring is false. So in else case, we'll check if s of I equals to s of j. If this condition holds, then what I will do is gp of I of j equals to what we have to do is, here you can see
we have to increase the row by 1 and decrease the column by 1. If I have to check for length 6, length 7, if this was my example, or you can see first and last character is same, r and r is equal, and now we have a substring of length 5. Now we have to check if this substring is true palindromic or not. So what we have to do is we have to check for length 5. So what I have done is I have increased the row by 1, so I am here, and I am decreasing the column by 1, so I am at this index, and you can see here true mark is there, so we will return true. So dp of I of j equals to dp of I plus 1. We have increased the row by 1 and we have decreased the column by 1 in this case. So we have done this part. Now what I will check is one thing. Yeah. Now we'll check a condition like if after this hmm, hmm, if dp of I of j, if this exists, then we will increase our count plus plus. This is the final answer. So finally we have to return count. Now let's run this and see if this will work or not. It is giving me some error. So j equals to, yeah, here is the some hmm, this should be comma. Now again run this. Line number, this should be our concept is correct. Here should be a semicolon. It is giving me some wrong answer. Let's see why it is giving me some wrong answer. So this is perfect. So why it is giving me wrong? Let's see. Yeah. If my difference equals to 0, so the problem was in this one we didn't mark it as false. So that was the case. That's why it is giving me wrong answer. So now let's mark it and run this. It is working perfect. Let's submit this rule. Yeah, it is working perfect. So this was a complete solution. So this is the edge case. If we do not mark it as false, then this will give me false. If in this condition, if else condition, if here no need to write the else condition because we have marked it as false, so no need to write this false condition. I have written this for the easy as purpose. So this was the complete code. If you find this helpful, then please like, share, subscribe.